Dear viewers, Namaskar. We are here today to talk about leprosy, and the title of the today's discussion is No Leprosy to No Leprosy. Let me give you an overview of this problem in India as well as globe. Leprosy currently affects approximately 250,000 people throughout the world, with the majority of these cases being reported to India. The global leprosy situation has changed significantly over the last 4 decades with introduction to MDT, which is multi-drug therapy, which was introduced in the year 1982, and it has worked tremendously across the globe, and it has reduced the prevalence of leprosy. And leprosy in India has saw reduction in prevalence, and by the end of year 2005, India declared to have reached the WHO target of elimination of leprosy as a public health problem. Post 2005, major changes in the program has been witnessed, and National Leprosy Elimination Program in India is running, and it is working. This program is dedicated to the issue of leprosy. Today we have among us Dr. Ashok Agarwal, and let me introduce Dr. Agarwal. He is a medical doctor with MD in community medicine and CEO of NLR India. NLR stands for No Leprosy Remains. And he comes with the 30 years of experience in different fields of public health, including program design and implementation related to health as well as research. He has been contributing to important public health, namely HIV AIDS, tuberculosis, tobacco, leprosy, and others. He has been associated with multiple organizations and non-governmental organizations. To name the few: Indian Council of Medical Research, CARE, Catholic Relief Services, Public Health Foundation of India, and as stated earlier, he is a CEO of NLR, which stands for No Leprosy Remains. I am Dr. Binod Kumar, Assistant Professor, School of Social Work. Welcome you, sir. Thank you. So, before asking any questions, I just wanted to welcome you, and I wish to ask you that in a layman term, if you have to define the problem of leprosy, how you would define it? Thank you, Professor. It's my honor to be here today. And NLR stands for Until No Leprosy Remains, meaning our organization is committed to work on leprosy till it is eliminated and the suffering is mitigated. Now, coming to the question, what is leprosy? Well, leprosy is caused by a bacteria, and that bacteria was discovered around 150 years back in 1874 by Dr. Hansen in Norway. Discovery of this bacteria actually resulted in breaking one very important myth, which was that leprosy is hereditary, and which actually is a historical impact which has created a lot of stigma and discrimination. So the discovery of this bacteria by Dr. Hansen, and
he then junked this theory of hereditary transmission. So leprosy is is actually the oldest bacterial disease known to mankind. However, there has been evidence of people suffering from leprosy as old as 4,000 years. Like in India, we have found a skeleton from Balathal, which showed signs of leprosy, symptoms of leprosy. It's a disease which is not transmitted easily, though it is transmitted through nasal droplets, but it doesn't transmit like tuberculosis, which transmits very fast. And it's a disease which against which we have now medicine which actually kills the bacteria and cures the infection. Also, we have medicine which can prevent transmission of leprosy. Okay. So, once we know about the basics of leprosy, can you explain the characteristics? How a layman can identify that this is a problem? Like, how does it spread, or whether it is a preventable disease or not? Does everyone who gets the bacteria have the disease? So, what are the basic characteristics of the, you can say, nature of this particular disease? Can you explain? So, the commonest sign and symptom of this disease is having a skin patch, and that skin patch doesn't have sensation, meaning a numb skin patch, and which is discolored, sometimes reddish or coppery in color. So that is the commonest symptom and sign of leprosy. Now, how it is transmitted? It is transmitted through droplets meaning like through breathing, through respiration. But as I said, that it's not transmitted that easily. And the incubation period meaning the interval between entry of the bacteria within the body up to the appearance of symptom is quite long, around 2 to 5 years. And sometimes it may be more than 10 years. So many a times it might happen that I have the leprosy bacteria, but I don't have the disease, right? And hence, what is required is that we should try to find out the leprosy as soon as possible, meaning people who are infected by leprosy as soon as possible. And as I said, the symptom is very easy, which is numbness of skin, and early detection can provide the opportunity of early treatment. And when I say early treatment, the treatment is available as multi-drug therapy, and which is available free of cost at government health facilities. Cash needs to be taken for 6 to 12 months, depending on the type of leprosy. And it can also then provide the opportunity of contact tracing, meaning people who are exposed to the leprosy infection, the source, and there's a definition like who could be called a contact. A person who has been exposed to around, say, 20 hours per week for 3 months in the last 1 year is called a contact. So such people need to be then given the preventive therapy. And before that, they need to be examined for eligibility of preventive therapy. For example, like a person who already has symptom of leprosy, or has a symptom of tuberculosis, or has symptom of kidney disease or liver disease, cannot be given the preventive therapy. And the preventive therapy is again available free of cost
at government health facility, and it is very simple. Just a single dose of rifampicin needs to be given. So, as we are getting that essentially it is not that bacteria is there, then the disease will appear. So many times it has some gestation period, and then it will appear, and through contacts it can be prevented. So what are the other measures through which it can be prevented? Like Right. I should also mention that there is also natural immunity towards leprosy. So I might get exposed, but I may not get the disease itself, right? And almost 90% of the population has the natural immunity against leprosy. So if I again ask you that what are early symptoms of leprosy? That means why I am asking from the viewer's perspective that they are not experts. So how at the early stage they should be identifying and knowing the things and approaching the health facility, Right. so that it can be nip in bud at the earliest whatever possible way. Right. So the earliest symptom and sign is numbness of skin. So any skin patch, right, with numbness, right, is to be suspected for leprosy. And along with that, sometimes we might find swelling of nerves, right? And in some cases, we can also find some swelling in the ear, right, or nodule on the face. But the commonest symptom and sign is skin patch with numbness. So that is the earliest symptom and sign of leprosy. Okay, thank you. If I ask you the process of diagnosis, in medical science there are number of systems through which it can be diagnosed, but when it comes to a common man, so how and when they should approach the health facility? So can you throw some light on that? Right, very good question. So now the diagnosis of leprosy happens to be mostly clinical. Mostly clinical meaning like based on signs and symptoms. There is also a test called slit skin smear test. But that test may miss lot of cases of leprosy. Almost around 60% of the cases are missed by slit skin smear test. So slit skin smear test can only be used when it is present, when it is available. So it is mostly available at the district health facilities, and many times it is used to distinguish between an early case of early case of leprosy and a multibacillary case in which there are multiple bacteria, so which can be visible. So it is kind of a gold standard where you can see the bacteria, but in early case of leprosy where the bacteria are not visible in the skin patch, it misses. And apart from that, nowadays we also have good development in terms of there is a PCR based test developed, like for tuberculosis. And in India itself, there is an agency called TLMTI, the Leprosy Mission, and who have developed this test and which has potential to diagnose leprosy in early stage. However, for most practical purposes, it is the skin patch with numbness which should give a warning signal to a person who has that symptom, or to a family member or a friend who comes to know about this. So once we know the diagnosis part of it, can you say that when we talk about treatment part, so is it fully curable, and what are the chances of reappearing in a different phases of life or maybe after some time? And what are the possibility? Many patients are not taking medicine completely, and in that cases, how it is reappearing? So can you throw some light on that? Right. So leprosy, as I said,
that we have very effective medicine available for it. And the MDT, which consists of 3 medicines and is given for either 6 months or 12 months, depending on the type of leprosy. It kills the bacteria and cures the person. In fact, a person becomes non-infective even after the first dose of therapy. Now, the question on relapse. Yes. Now, the question on relapse is that it may actually relapse in some cases, but that is quite rare. And so a person, but that cause of relapse may be sometimes that the leprosy is not treated completely, but those are rare cases. Or sometimes the person is reinfected, right? So this is the chance of, but the chance of relapse reinfection, when we are talking about reinfection, it is a new infection itself. So yeah, it is not relapse. It's a new infection. It's a new infection after the person can get again exposed, again get leprosy. Yeah, so that's a reinfection. Okay. So once we have made the diagnosis part of it, so for all the disease we see that early intervention is the key. And if we are missing that early intervention part, there are consequences which is fatal, or many times it is causing more damage. In case of leprosy, if I ask you, what are the chances? That means how far early intervention is effective, and how, if early intervention at this stage, if patient is not approaching the health facility, how it can impact, or what are the consequences of it? Well, if the early diagnosis of leprosy is missed, then what happens is there is a chance of disability coming in. And when I say disability could be of eyes, hands and feet. And this disability could be a lifelong suffering. Now let me explain how. In the feet, the person might get ulcer. Now why that ulcer is happening? Because there is loss of sensation, and because of loss of sensation, the person doesn't feel any, doesn't have feeling of any heat or cold or of any sharp edge, so gets injured. If the person is cooking in the kitchen, can get burnt and doesn't know. So this way, what happens is that there is injury, repeated injury, which can cause ulcer, which if not taken care of gets complicated. Sometimes the ulcer can become so severe that there is a pus coming out of it. Then also it can be infested with maggots. Now you can well imagine if a person has a foot in which you can see an ulcer which is going down up to the say bone, right, and which is smelling, oozing, and which has maggots in it, people will just not want to look at that person, right? Yes. So and then what happens is the person due to not only due to stigma and discrimination, but also because of the disease, the physical inability, is not able to do the daily chores of life, is may not have enough energy to do work, right? Or he may not be getting an employment. And it's not only the person who is affected, but his family is also affected, in the sense that they also are stigmatized and discriminated. The other people in the society, they keep a distance from this kind of family. They don't involve them in social functions. And the children who go to school, colleges, they also get discriminated. In employment also they get discriminated. So the life becomes miserable. So this is the aspect of leprosy which makes leprosy a dreaded disease. So you
talked about this burning and the kitchen thing. Just I wanted to know that how these things are, that means what are the percentage of these kind of diseases? Not exact percentage, but because one side there is an infection, on the other side these kinds of accidents are also causing some sorts of disability. So how these are related with the leprosy? Can you give some, throw some light on it? Right. So, if I quote the recent figures, in India, we get around 100,000 new cases every year. 100,000 meaning 1 lakh new cases every year. And out of which, at the time of diagnosis, almost 5%, meaning 5,000, they are detected with some kind of disability, either grade 1 or grade 2. Oh. Grade 2 is the severe form where a person can see the disability, right? And almost 5% of the infected who are detected, almost 5% of them are also children, right? So now we can well imagine, say 5,000 just in a year, right? And in many cases, it can become a lifelong suffering, right? And leprosy doesn't kill, right? Which means that a person, say, detected at the age of, say, 15, 20, 25, right, may live for another 40 years, right? So now 5,000 per year, right? Even 5,000, earlier it used to be more, right? So there could be lakhs of persons with disabilities due to leprosy who are living in the country, right? And we don't have an, like we have an estimated figure, but it needs to be regularly updated each year. So you talked about the disease burden when it comes to India. If I ask you from the macro perspective, that is nationwide perspective, so do you still think that it is a public health problem in India? And what are the measures which we can take as a community, or may, because health professionals and government is already taking initiatives, several programs are there. So what community can take? That means individual, those who are affected, or society where there are larger incidences. So how you see from the macro perspective in terms of distribution of cases and all? So can you dwell something on it? Right. So like these 100,000 cases, right, they are distributed across different states and districts. And as per the recent data, we have around 125 districts, right, which are high burden districts out of 800, right? And when we say high burden, meaning like more than 1 case per 10,000 of population. So these are the districts which need to be addressed on a priority, right? And you said that is it still a public health problem? It is very much a public health problem. The announcement in 2005 where we achieved elimination at the national level, meaning like at the national level, the prevalence came down less than 1 per 10,000, right? But there were many districts and states, right, where it was high. And still we have, as I said, that there are 125, right, districts. So it still remains an important public health problem. And the government of India has taken very good initiative. In 2023, it launched the National Strategic Plan. And the National Strategic Plan aims for reducing the number of new infections from 100,000 to 50,000 by 2027. Now, government alone cannot do it. It is the responsibility of all of us. All of us, by that I mean that we have a population of 1.4 billion, right? Now, 100,000 out of 1.4 billion is a very, very small number. But then, on the other hand, we require
these cases to be detected early, right? So now how that early detection can happen? That early detection can only happen if people start suspecting themselves, right? And accessing service. Now, how can a person, what prevents a person from self reporting? Two factors. One, that the person doesn't have knowledge about it, doesn't have the knowledge of the sign and symptom of leprosy. And second, even if the person knows, right, there is huge amount of stigma and discrimination, right? So the person avoids going and accessing a health facility. There are cases which we have seen even in recent times, that there are people from, say, patients from Bihar and UP coming to Delhi for treatment just to avoid identification in the place where they live, right? So we, all of us, have a huge responsibility to know about leprosy, have the minimal knowledge about leprosy, which is which are not too many things. One, leprosy is a disease for which we have medicine which kills the bacteria. We have a medicine which can prevent transmission. It doesn't spread easily. So the risk of getting is very, very low, right? And there are three predisposing factors. The predisposing factors are overcrowding, poor nutrition, and sanitation, poor sanitation. And so, like we can well imagine that these factors are much more prevalent among poor people, right? So it is actually a poor man's disease, right? So if we address these factors, again we can reduce the prevalence of leprosy. But then all of us can contribute in early detection, and if early detection happens and early treatment happens, then the disability can be prevented. Like earlier, we used to have around 15%, 20% of the persons infected to be suffering from disability many years back. But now, gradually that has come down to 5%. It might come down much more. And it will come down if we are detecting the cases early. Recently, you talked about the poor man's disease. About leprosy you were talking. So, why it is a poor man's disease? Exactly, if you see the data, you will find the average distribution of the patients of leprosy across India. The state-wise also you can see that there is reflection of that. That means their GDP and all. You will find that there is a reflection of their economic capacity. So why it is that? That means I am asking from the medical science perspective. When it comes to leprosy, what are the reasons? That means food habits, nutrition, or maybe what is lacking for the poor people? How they are getting in contact with the bacteria? Right. So we need to understand that how it is transmitted, right? It is transmitted by a person coming in contact with a person who doesn't have, right? So now, and the transmission happens through respiration, right? So if people are living very closely, meaning like if there is overcrowding, right? And which we see much more amongst poor people, right? And then we spoke about nutrition. So if nutrition is low, immunity is low, right? And that also we can jolly well think that it is more amongst poor people, right? We spoke about sanitation. So again, the living condition of poor people, the sanitation is quite low. So all these factors together, and again, the knowledge about leprosy, accessing treatment, right? All these things are again lower in people who are poor,
right, who are stretched with their resources, right? So all these factors together has made leprosy a poor man's disease. Thank you, sir. We will take a short break and we will come again. Thank you. Thank you. हमारे मुल्क हिंदुस्तान ने एक ऐसा इदारा कायम किया है, एजुकेशनल यानी तालीमी इदारा, जहां हर तरह का इंसान तालीम हासिल कर सकता है। इस इदारे में तालीम हासिल करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, मर्द हो, किसी भी इलाके का हो सकता है, वो तालीम हासिल कर सकता है। बहुत कम ख़र्च में यहाँ बेहतर तालीम दी जाती है और तालीम का मेयार बहुत बेहतर इसलिए हो पाता है कि यहाँ के जो कोर्सेज़ हैं वो बहुत मेहनत से तैयार किए जाते हैं और वो उनके मल्टी ज़राए हैं, मुख्तलिफ़ ज़राए से उन कोर्सेज़ को लोगों तक पहुँचाया जाता है। ख़ास तौर से उर्दू का जो प्रोग्राम है जो मैं देखता हूँ, यानी सर्टिफिकेट कोर्स से लेके PhD तक, तो बहुत उम्दा कोर्स है और हर कोर्स के जो निसाबात हैं वो बहुत उम्दगी से, बहुत ज़्यादा तरीके से तैयार किए गए हैं। माइनॉरिटीज़ के लिए, वीकर सेक्शन के लिए, उनके जिनकी आमदनी कम है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा इदारा है। इस इदारे से जुड़ने पर न सिर्फ ये कि तालीम मुकम्मल होती है बल्कि इंसान का रोशन मुस्तकबिल होता है, उनकी ज़िंदगी संवरती है। तो मैं चाहूँगा कि इस इदारे का हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए और अपनी ज़िंदगियों को घर बैठे संवारा जाए और एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ चला जाए। मैं इग्नू को इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। हमने अभी तक जो अगर आम तौर पर बात करें तो लेप्रोसी का जो बेसिक सिम्टम्स है उसके बारे में जाना, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, केस लोड क्या है, उसके बारे में हमने जानकारी आपने दी है। अब मैं आगे श्रोताओं से मैं आपको लेके चलता हूँ और मैं ये जानना चाह रहा था कि जो परसेप्शन है लेप्रोसी के लेकर, जो परसेप्शन है दैट इट इज़ नॉट लेथल, एज यू हैव ऑलरेडी highlighted that it is not killing people. So it is not killing people in comparison to many diseases like TB and all. In that way, what happens is that for a common man, it doesn't come into their priority. Initially, they are not able to focus into the treatment part. Government is doing all these things are available, as you have already highlighted that it is free of cost, it is available in the public health centers. But how they should approach this particular problem, because this is not a fatal, so they many times unintentionally, not intentionally, unintentionally they are not
giving proper attention to the leprosy problem in the family, or maybe of related to a spouse. So what we can give the message so that they give importance to it and start the early intervention in terms of starting the treatment in the government facilities. Right. So now let me start with the case we just now discussed Yes. about, like during the break time, we discussed about a person who went to different doctors, right, over the last 1 year, and was not diagnosed for leprosy, right? Now, this is the challenge, right? That the knowledge about leprosy has gone down, right? Now, why it has gone down? On one hand, the good thing is that we have decreasing number of cases. But you know, our goal is what? Our goal is to eliminate leprosy, right? And also mitigate the suffering. Yes. Now, that elimination is possible. Why it is possible? Because we have the tools, and the tools are that we know the epidemiology of leprosy. We have the medicines which can cure leprosy. We have medicine which can prevent leprosy, but they need to be used. So the opportunity of using them can only happen if there is early detection. तो ये जो जल्दी खोजने की जो ज़रूरत है वो तभी हो सकती है जब हम लोग सब मिलके खोजें. और डॉक्टर साहब ने मेरे को ये पूछा कि ये किसी के लिए इम्पोर्टेंट क्यों होना चाहिए. मैं बोलूँगा ये मानवता के लिए होना चाहिए और खुद के लिए भी होना चाहिए. क्यों मानवता? हम लोग सब चाहेंगे कि हमारे समाज में सबको सम्मान से जीने का हक हो. हमारे प्रधानमंत्री जी भी यही कहते हैं कि हम सबको साथ लेके हम उन्नति की तरफ चलें, सबको सम्मानजनक जीवन मिल सके. तो अब वो सम्मानजनक जीवन तभी मिल सकता है जब कुछ कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं उसको एड्रेस किया जाए. तो ये लेप्रोसी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ लोगों का तिरस्कार होता रहा है, लोगों का स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है हजारों साल से. जैसे मैंने कहा कि करीब 4000 साल पहले का भी हमें एविडेंस मिला है हमारे देश में. तो अब और फिर हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी थे, उनका भी क्या ड्रीम था? उनका ड्रीम था कि हमारे देश से हम लेप्रोसी हटाएं. तो इसलिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए, प्रायोरिटी होनी चाहिए कि ठीक है, अच्छी बात है कि इससे लोग मरते नहीं हैं, लेकिन जिसको हो जाती है, जिसको डिसेबिलिटी होती है, वो तो रोज उसका रोज़मर्रा का जीवन खराब हो जाता है. तो वो तो कुछ तकलीफ़ होते मतलब वो पूरी ज़िंदगी, बहुत केसों में पूरी ज़िंदगी तो वो उसकी सफरिंग हो जाती है. तो और फिर ये नहीं पता कि किसको हो जाएगी. ठीक है, हम लोग ये कह रहे हैं कि पुअर मैन्स डिजीज़ है, लेकिन इसका मतलब नहीं किसी और को नहीं होगी. ठीक है, किसी को भी हो सकती है, राइट. तो फिर क्या है, इसकी नॉलेज जो मिनिमल नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, वह मिनिमल नॉलेज सबको होनी चाहिए. अब ये जो ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन है, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे अज्ञानता कारण है.
इसके पीछे बहुत सारी मिथ हैं, वो कारण हैं। क्या मिथ है? सबसे बड़ी मिथ क्या है? सबसे बड़ी मिथ ये है कि ये भगवान का श्राप है, कि इस व्यक्ति ने कुछ ऐसा किया है कि भगवान नाराज हो गए और उसको श्राप दे दिए। और ये चीज़ें दुर्भाग्यवश हमारे ग्रंथों में भी लिखा है, और मतलब खाली हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा, करीब करीब कई ग्रंथों में लिखा हुआ है। और उससे फिर क्या हुआ है कि पीढ़ी दर, मतलब जैसे अगर मेरे को लेप्रोसी हो गई, तो जबकि लेप्रोसी हेरिडिटरी नहीं है, लेकिन जो स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हेरिडिटरी हो गया है। अगर मेरे को है तो मेरे बच्चे को सफ़र करना पड़ रहा है स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन, मेरे पोतों को सफ़र करना पड़ रहा है स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन। और इसके लाइव एग्जाम्पल है हमारे देश में, खाली हमारे देश में नहीं, दूसरे देशों में भी। ये दिल्ली अपनी नेशनल कैपिटल है, यहाँ भी हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ भी एक जो मैं आपको केस बताना चाहूँगा कि किसी को ये पीरागढ़ी में कहीं नौकरी मिली, तो और वो रहता था एक लेप्रोसी कॉलोनी में पास में। तो वहाँ से जो उसका ऑफिस था वॉकिंग डिस्टेंस था, लेकिन वो क्या सुबह जल्दी जल्दी चला जाता था और शाम को देर से छुट्टी होने के बाद निकलता था। क्यों? क्योंकि उसको कोई देख नहीं ले कि वो लेप्रोसी कॉलोनी में रहता है। तो ये है, तो ये जो छुप के रहना पड़ रहा है, तो उससे क्या होता है? उससे उसका मतलब ये है कि उसको जो सम्मान मिलना चाहिए उस इंडिविजुअल को या उसके फैमिली को, वो नहीं मिलता। और जो इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ सेटलमेंट लाइफ, इन सब से डिप्राइव हो जाते हैं। तो इसको तो फिर हमें सबको मिलके एड्रेस करना चाहिए। आपने दो चीज़ें अभी बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई कि जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आज से ऑलमोस्ट मोर देन 100 years बैक ही एडवोकेटेड फॉर डिग्निफाइड लाइफ फॉर द लेप्रोसी पर्सन। सो अगर हम देखें तो मतलब इंडिया में जो इंटरवेंशंस का और उनके रिहेबिलिटेशन का जो हिस्ट्री है वो काफ़ी बड़ा है और उस पर काम काफ़ी हुआ है। मतलब हिस्टोरिकली भी उसके बाद आज़ादी के बाद भी बहुत सारा काम हुआ है और रिडक्शन, उसका रिजल्ट भी हमें मिला है कि बहुत सारा जितना जो केस लोड था, और जैसा कि डेटा बोल रहा है 50% अभी भी, मोर देन 50% केस लोड इंडिया में है। तो उसका किस तरीके से मतलब कॉन्सिक्वेंस किस तरीके से रहा है? अगर गवर्नमेंट प्लान की बात करें तो गवर्नमेंट के हेल्थ सिस्टम में क्या प्रायोरिटीज़ रहा है? मतलब पहले तो ज़्यादा प्रायोरिटीज़ था, अभी थोड़ा कम हुआ है, या प्रायोरिटीज सरकार की अभी उतने ही हैं? दूसरा चीज़ ये पूछना चाह रहा था कि अगर सैनिटोरियम्स देखेंगे तो उनका जो लोकेशन है, जैसे आप बार बार बोल रहे हैं कि वो उस कॉलोनी में रहता है, लेप्रोसी की कॉलोनी में रहता है, तो he doesn't want to identify with them because he has to earn livelihood and any individual will not want discrimination at a public place. तो इसका किस तरीके से जो सैनिटोरियम्स का लोकेशन है, यूजुअली पहले जो हिस्टोरिकली रहा है कि वो शहर के बाहर होता था, तो इसके पीछे क्या रीजन था और ये दोनों चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं कि हिस्टोरिकली उनका वर्क जो है पब्लिक हेल्थ किस तरीके से वर्क किया है और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन किस तरीके से बढ़ा है, घटा है, अटेंशन गवर्नमेंट का? तो मैंने जो एग्जाम्पल दिया था वो एक लेप्रोसी कॉलोनी को दिया था, जिसको डॉक्टर साहब सैनिटोरियम बोल रहे हैं। हमारे देश में करीब 750 लेप्रोसी कॉलोनीज़ हैं। ये लेप्रोसी कॉलोनीज़ कब बनी, कब स्टैब्लिश हुई? जब ये माना जाता था कि एक लेप्रोसी अफेक्टेड को अलग रखा जाए। ये उन दिनों बनी और वो टाइम था ब्रिटिशर्स का। लेकिन उसके बाद में फिर हमें पता चला, जैसे मैंने शुरू में बताया था, कि डॉक्टर हैंसन ने उन्होंने डिस्कवर किया बैक्टीरिया एंड ही आल्सो फाउंड आउट कि
ये हेरिडिटरी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद फिर एक और बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ कि 1983 में इसकी दवाई आ गई, एमडीटी आ गई। तो ज़्यादातर केस अभी कॉलोनी में नहीं रहते हैं। अब ये जो 750 जो कॉलोनी है, इसमें पुराने केस हैं, मतलब जो पहले रिलोकेट हो गए थे, काफ़ी स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन था कम्युनिटी में। और अभी अगर आप देखोगे तो इन कॉलोनीज़ में हो सकता है आपको औसतन 4 से 5 पर्सन विद डिसेबिलिटी ड्यू टू लेप्रोसी मिलेंगे। बाद बाकी लोग उनके बच्चे, उनके नाती पोते वगैरह वगैरह मिलेंगे, ठीक है। और हमने ये भी जाना कि हर साल करीब 1 लाख नए केस हो रहे हैं। ये कहाँ हैं? तो अगर कॉलोनी में करीब 4-5 हज़ार लोग ही हैं तो बाद बाकी तो सब कम्युनिटी में है ना, जनरल कम्युनिटी में है। तो मेजॉरिटी जनरल कम्युनिटी में रहती है। तो जनरल कम्युनिटी में रह के भी उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम अगर किसी को ये बता दें कि मेरे को लेप्रोसी है तो उसका बिहेवियर चेंज नहीं होगा। इनफैक्ट मैं एक आंकड़ा बताना चाहूँगा। अभी हम लोगों ने एनएलआर इंडिया ने ही ये स्टडी की है और उसमें हमने पाया है कि अगर सोचो मैं किसी को अगर पता चल जाए, मैं पढ़ रहा हूँ वो आंकड़ा क्या है। हमने एक स्टडी की जिसमें हमने जो लेप्रोसी रिपोर्टेड रिलेटेड डिसेबिलिटी ऐसे लोगों को हमने इंटरव्यू किया और वहाँ उन्होंने बताया कि अगर किसी लोग हमसे डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, करीब 50% लोग, उसके बाद 40% ने कहा कि मैंने जब उनको अपने लेप्रोसी स्टेटस के बारे में बताया तो वो हमसे दूर हो गए, हमसे दोस्ती करना बंद कर दिए। 40% ने बताया कि मेरे को खुद काफ़ी झिझक होती है शेयर करने में। उसके बाद और 40% ने ये बताया कि लोग अनकंफर्टेबल हैं हमारे आसपास में होने के लिए। और फिर हमें ये भी पता चला कि बिकॉज ऑफ ऑल दिस स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन, उसके बाद फिजिकल इल बीइंग और चैलेंजेस एक्सेट्रा, जो और फिर बच्चों का चैलेंज ये सबसे ज़्यादा पीड़ित करता है एक माँ बाप को। क्या तो इससे क्या होता है, इससे जो मेंटल वेलबींग है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और देखा गया है, ये भी हमारी स्टडी कहती है कि करीब 45% पर्सन्स विद डिसेबिलिटी ड्यू टू लेप्रोसी, उनको उनका जो मेंटल वेलबींग है वो अफेक्टेड हो जाता है और उनमें से काफ़ी लोगों को सीवियर डिप्रेशन भी हो जाता है। तो मतलब क्या है कि बिकॉज ऑफ द स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, राइट, जो लाइफ है ऑफ अ पर्सन अफेक्टेड बाय लेप्रोसी और उसकी फैमिली की, ये काफ़ी उनको सफ़र करना पड़ता है। उनकी लाइफ किसी भी तरह से सम्मानजनक नहीं रहती। हर स्टेप में उनको चैलेंज फेस करना पड़ता है। तो ये तो एक ह्यूमन इनजस्टिस है। तो अगर हम लोग ह्यूमन राइट बेस्ड भी अगर हम लोग अप्रोच लें तो हमें इन सब को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। आपने दो बातें की, जैसे अगर हम बात करें कि दो एस्पेक्ट हैं डिजीज के। एक तो है फिजिकल एस्पेक्ट्स है जो डिसेबिलिटी में कन्वर्ट हो जा रहा है, दूसरा है जो आपने बात किया, जो हाईलाइट किया, मेंटल हेल्थ। ड्यू टू स्टिग्मा दे आर नॉट एबल टू शेयर कॉन्फिडेंटली, और उसकी वजह से कि उनकी एक्सेसिबिलिटी जो बिहेवियर है, एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ सिस्टम्स, वो भी चेंज हो रही है ड्यू टू स्टिग्मा। दोनों चीज़ों में अगर हम देखें, फिजिकल और मेंटल हेल्थ वेलबींग की हम बात करें, तो क्या उनका जो फिजिकल हेल्थ है वो बच्चे कर सकते हैं
और नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, जो लेप्रेसी अफेक्टेड पर्सन है उसका क्या कंडीशन है, मतलब इस तरीके की चीज़ों को अगर हम किस तरीके से देखते हैं, मेडिकल साइंस का क्या इसमें बेसिकली स्टेक है वो दे सकते हैं। और दूसरा जो एस्पेक्ट है वो मेंटल हेल्थ वाला आपने हाईलाइट किया है, पर फिजिकल एस्पेक्ट्स में मैं पूछना चाह रहा था कि क्या वो नॉर्मल लाइफ जीने में कितनी उनकी क्या बाधाएं हैं, या वो जी सकते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? देखिए, आपने थोड़ी देर पहले ये भी कहा था कि रिहेबिलिटेशन की बात आपने कही थी, तो ये रिहेबिलिटेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे हमने देखा कि जिनको डिसेबिलिटी हो जाती है उनके हाथ पांव कमज़ोर हो जाते हैं, मतलब वो नर्व उनकी अफेक्ट होती है, नाड़ी अफेक्टेड होती है। नाड़ी अफेक्टेड होने से क्या होता है कि सेंसेशन लॉस होता है और उसमें वीकनेस आ जाती है, और जो कई बार क्लॉ हैंड हो जाता है, मतलब जैसे चिड़िया का पंजा वैसा हाथ हो जाता है, वैसे पाँव भी वैसे हो जाते हैं। और कई सालों तक ऐसा रहने के बाद फिर क्या होती है कि जो फिंगर्स हैं, टोज़ हैं, वो भी सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, तो अब इसका क्या इलाज है? इसका इलाज क्या है कि एक तो फिजियोथेरेपी, उसको हम लोग सेल्फ केयर भी बोलते हैं, कि जैसे ही अगर किसी को ये लेप्रोसी हुई तो उसकी पूरी तरह से डायग्नोसिस होनी चाहिए, पूरी तरह से उसकी जो नर्व अफेक्टेड है कि नहीं वो एग्ज़ामिन करना चाहिए। उसके बाद फिर लिम्स में कितनी ताकत है ये देखना चाहिए। उसके बाद फिर उनको ये गाइडेंस देना चाहिए कि किस तरह उनका हाथ नहीं जले, हाथ प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, किस तरह उसका पैर प्रोटेक्ट रहना चाहिए। तो स्पेशल शूज हैं, उसको हम लोग कॉमनली जो अवेलेबल हैं उसको MCR शूज़ बोलते हैं, माइक्रो सेल्युलर रबड़। तो उससे फिर चोट लगने की जो संभावना है वो कम हो सकती है। फिर कुछ असिस्टिव डिवाइसेस हैं। असिस्टिव डिवाइसेस जैसे अगर मेरे फिंगर्स में प्रॉब्लम हो गई है और मैं चम्मच कैसे पकड़ूं, तो एक बैंड होता है उसमें चम्मच लगी रहती है, तो उससे मैं ये अपना खाने पीने का काम कर सकता हूँ। ठीक वैसे ही किसी को क्रच की ज़रूरत हो सकती है, व्हील चेयर की ज़रूरत हो सकती है। लेकिन इसके साथ में जो सेल्फ केयर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे घाव को साफ़ करना, एक्सरसाइज करना तरह तरह की। और इससे देखा गया है कई बार कि जो डिसेबिलिटी बिगड़ रही थी वो भी सुधर गई। तो ऐसे बहुत सारे केस हैं। इसके अलावा मेडिकल साइंस में अब और एक चीज़ अवेलेबल है विच इज़ कॉल्ड, अभी नहीं लेकिन कई सालों से अवेलेबल है, इट इज़ कॉल्ड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। मतलब उसमें क्या है कि आपका कमज़ोर हो गया कोई हाथ का पोर्शन, तो दूसरी जगह से उसमें वो लिगामेंट मसल ये ट्रांसफ़र करके और आपका वो हाथ में आपका जोर आ गया, पैर में आपका जोर आ गया। लेकिन ये भी तभी होता है जब आपकी जो जॉइंट्स हैं वो थोड़े मोबाइल हैं। तो फिर अर्ली डिटेक्शन, मतलब जो एलिजिबिलिटी ऑफ RCS है, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, वो भी देखनी चाहिए टाइम से। और अभी लेटेस्ट और एक चीज़ आई है, वो एक सर्जरी ऐसी है जिसमें सेंसेशन रिस्टोर हो जाता है। तो अपने देश में के ही एक डॉक्टर है, प्लास्टिक सर्जन हैं, जिनका नाम है डॉक्टर पवन अग्रवाल। तो ये जबलपुर में हैं, सरकारी अस्पताल में वहाँ काम करते हैं। तो उन्होंने ये सर्जरी इजाद की है जिससे कि सेंसेशन वापस आ जाता है। तो वो एक बहुत ही अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है। तो ग्रेजुअली ये सारी चीज़ें जो डेवलपमेंट हुई हैं, इन सब की एक्सेस हमें बढ़ानी चाहिए। तो अब जो अफेक्टेड लोग हैं जिनके बारे में हमने सुना, हमने जाना कि वो
काफ़ी गरीब हैं और डिप्राइव्ड ऑफ सारी चीज़ों से, तो उनके लिए तो ये सब होने के बावजूद उनकी एक्सेस काफ़ी पुअर होती है, राइट? तो उस एक्सेस को बढ़ाने की ज़रूरत है। जो हमारा प्रोग्राम चलता है, सरकारी प्रोग्राम चलता है और एनजीओज भी साथ में काम करते हैं, तो इन प्रोग्रामों को भी जो केयर आफ्टर क्योर बोलते हैं, मतलब जब लेप्रोसी बैक्टीरिया को आपने मार दिया एमडीटी दे के, लेकिन उसके बाद जो केयर की ज़रूरत है, केयर आफ्टर क्योर, तो केयर आफ्टर क्योर को और काफ़ी स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, क्योंकि तभी तो जो लाइफ लॉन्ग सफरिंग है अफेक्टेड की वो कम होगी। मैं क्विकली आपसे 2-3 सवाल और पूछूंगा। मैं एक चीज़ ये पूछना चाहता था, आप लंबे समय से इस एरिया में काम कर रहे हैं, लेप्रोसी के एरिया में, क्षेत्र में, आपका कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस जो आपको मूव किया हो, या ऐसा एक्सपीरियंस हो जो आपको थोड़ा सा झकझोर दिया हो इस तरीके के, मतलब ये आपने ग्रेविटी ऑफ प्रॉब्लम ऑलरेडी हमें बता दिया कि इस तरीके के प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको कभी ऐसा इनकाउंटर हुआ है अपने काम के दौरान, क्विकली बता सकते हैं? हाँ, थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। और एक्चुअली मैं 2019 में लेप्रोसी फील्ड में आया, तो पिछले अभी 6 साल होने चले। इसके पहले मैंने HIV में काम किया था, तो HIV में भी स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन मैंने काफ़ी देखा, लेकिन जब मैं लेप्रोसी का देखा तो मैं एकदम हिल गया, क्योंकि एक तो लेप्रोसी इतनी पुरानी बीमारी है, दूसरी मैंने देखा कि किन में ज़्यादा हो रही है, गरीबों में हो रही है। HIV सब में होती है, क्योंकि कॉमनेस्ट रूट ऑफ ट्रांसमिशन सेक्स है, सेक्सुअल है, जो कि सब कोई करते हैं। HIV जो इन्फेक्टेड हैं उनकी एक बहुत मजबूत आवाज़ है, लेकिन जो लेप्रोसी अफेक्टेड हैं वो बड़े कमज़ोर हैं, और उनकी सुनने वाले कम हैं और वो सुनाते कम हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे को मतलब हिला दी थी। और इनफैक्ट मेरा अब जीवन का एक मकसद मैंने सोच लिया है कि मैं चाहूँगा कि मेरे जीवन काल में लेप्रोसी पे कंट्रोल आ जाए, लेप्रोसी एलिमिनेशन पे कंट्रोल आ जाए, और जो सफरिंग है लोगों की ये काफ़ी कम हो जाए। 2 चीज़ें मैं क्विकली पूछना चाहता हूँ, समय का अभाव है, कि एक तो है कि NLR का जो इंटरवेंशन है क्विकली बताएं, ताकि लोगों को पता चले कि किस तरीके का काम आप कर रहे हैं, और दूसरा जो इस पूरे जो हमारा डिस्कशन है उसका सार क्या है, टेक होम मैसेज क्या है, क्या करना चाहिए, नॉट ओनली फॉर अफेक्टेड, हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड, प्रिवेंशन इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो क्विकली आप इसके बारे में बताएं। तो जो टेक होम मैसेज है, ये इसके बारे में पहले बात करना चाहूँगा, क्योंकि समय केवल 2 मिनट है। तो टेक होम मैसेज में मैं ये बोलना चाहूँगा कि एक, कि लेप्रोसी से दूर मत भागिए, डोंट बी स्केर्ड ऑफ लेप्रोसी। दूसरा, लेप्रोसी कैन बी क्योर्ड। तीसरा, लेप्रोसी कैन बी प्रिवेंटेड। एंड what all of us can do is have the right knowledge about leprosy, stop stigmatizing and discriminating the persons affected by leprosy. If we come across anyone we suspect has symptoms, then we help that person in accessing treatment. We could also volunteer ourselves in supporting the leprosy affected persons. We can mentor the children of the leprosy affected person, so that they could get good opportunity of education and employment. We can also donate money, funds, because funds are required for do the job, to agencies who are engaged in this work and who have some amount of experience of doing this kind of work, so that they can scale up the work which they are doing. As we have heard, there are
125 districts which are high burden, so they need special attention. Now coming to NLR, NLR happens to be the agency which has helped the government in bringing the preventive therapy to the country. It has developed a number of models of disability care, also addressing psychological problems, like we have developed basic psychological support guideline. We work very closely with the government of India, nationally and in different states we work. And we are an organization which is evidence-based, and our motto, our name is "Until No Leprosy Remains." Thank you. Thank you, sir. Thank you for a wonderful discussion. With this, we will close here. Thank you.